ओके, तो शुरू करते हैं आज के क्लास। So yes, yesterday we have started learning with tuple. So this is another data type that we have learned yesterday. Let's revise it first, and then what we will do, we will continue with some of the remaining examples, and then uh, let we can either finish the set also. Okay. So as we learned yesterday, tuple is similarly like string, integer, and float. These are data types, right? Similarly, tuple is also one of the data types which is used to store these many or more than these what we say data types. Like we can have different data types inside tuple. Tuple is denoted as like it's a parenthesis, right? Round braces. Inside round braces, values are separated by comma, and you can store anything like integer. You can store duplicate values. You can store floats. You can store strings. You can store boolean values, none values. You can store these tuple inside tuple, right? You can even store a list inside list, a list inside tuple, dictionary inside a tuple, and a set inside a tuple. Okay, so probably we will also learn this today. So let's complete tuple first, and then if everything is okay, we will start with set all. Okay, so cool. Next, we understood what is the difference between list and tuple, right? So list is something which is square braces inside a square brace. So similarly, inside a list also we can have a similar thing, right? But there is a slight difference between list and tuple. Okay, so the difference is these two. Whereas list is mutable and tuple is immutable. Okay, and since the list is mutable, it is a slower one and tuple is a faster one. Got it? And these are the same things that we have learned yesterday. Other than this, we also looked how we can check a type of whether list or tuple using a type function. And this is an example of tuple. This is an example of list. That's why the type of list came out list, and the type of tuple came out tuple. Okay. Then we saw one example that where we wanted, so we initially checked it list whether we can manipulate anything like, so here I tried to change Ronaldo's name with Cristiano Ronaldo, right here, and it did change. You can see it did change. And I wanted to pop Neymar, so this is a position 2, right? And I wanted to pop this. Pop means basically pop out, delete out, right? So you can see the name got changed. Neymar is no more here. But similarly, in tuple you cannot do these operations, right? So I wanted to change Rohit to Rohit Sharma, right? But it gave us an error. Okay, it gave us an error. It was saying it is not supported item assignment. So that is why we call it tuple as immutable. Immutable means you cannot really change it. You cannot really edit it, right? Or next, next we also tried to pop this, the second element. Whatever the second element was there, the second element I guess Dhoni was second element, right? But धोनी को कोई निकाल सकता है guys, right? So basically you cannot pop out any second item from or any item from tuple, right? You cannot really pop out from a tuple. So that's the case here. But you actually can delete entire tuple. So this is a system use. Like system से ही ये delete हो जाएगा, right? So that is the case here, and uh, then what we understood, yes. So tuple constructor that we have learned, right? So where basically what we did, we changed any string into a tuple. We changed any list into a tuple. So what we have to do is we just have to say tuple, and then there is a braces, and you just need to mention the data type.
or directly like this tuple of list of 1 comma 2 3 comma 4. Okay, now what will happen is, so this is a list, right? What will happen, the list will become a tuple, right? It will become a tuple. So this is how you can actually change the data type or convert the list or a string into a tuple. And string something looks like this. So every space it can consider. Okay, it will consider every space. So one more example of a string. Let's say string 1 is equals to uh, 1 2 3 4. Okay, 1 2 3 4 or 5, and I want to change it to let's say tuple 1 of tuple, and if I print out tuple 1, it will look like this: 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5, and the elements inside a tuple are string again. Although you can see these numbers, but these are string because these are covered with enclosed inside a quotes, right? Inside a quote, single quote. Then we saw these arithmetic operations, right? Arithmetic operations with respect to the tuple. So basically, this is one tuple, this is tuple two. You can actually add this tuple one and tuple two. So this is a tuple 1, 2, 3, 4, 5. This is a tuple 2, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. So you can have the addition of tuple. You can have a multiplication with any number. So basically, the same tuple will come twice, right? You can have this, but you cannot really multiply these two tuples, right? Because multiplication means 1 into 6, 2 into 7, 3 into 8, and that does not really happen in the tuple, right? Because like we cannot really access, or we do can access, but we cannot really change the inside elements. तो इसको या इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 को 7 से we cannot really multiply. So that's why this is a invalid operation. Again, we cannot really subtract one tuple from the another tuple, right? So we cannot like 1 2 ऐसा रहेगा एक tuple, and second tuple रहेगा 3 4. तो ये ऐसे नहीं होगा, 1 minus 3 2 minus 4, ये नहीं हो पाएगा. This is a invalid operation in tuple, right? This is a invalid operation in tuple. So that is why we got this particular error. Okay. Then we saw some another like a basic of tuple, that is indexing. So we saw it very quickly because we have learned this indexing in almost like in strings, in integers, in lists, and the other data types if we have seen. So indexing is now common and I think everyone knows it. So how the indexing is? So basically this is zeroth element. You can stand right? So this is a zeroth element. This is one element. This is two element. This is three element. This is four element. And we also seen slicing. Like if I want to slice this like this, I only want this two. So I will say 0 is to 0 1 2 3. तो मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पर. So what I will get 1 2 3 as a output. ठीक है? 1 2 3 as a output. And if I just want this 2 3 as output, so what I will say कि इस टपल का नाम ले लूंगा. ठीक है, ये टपल एज ए ले लिया मैंने. एंड व्हाट आई वांट दिस सेकंड एलिमेंट. ठीक है, क्योंकि ये जीरो है, ये फर्स्ट है, तो आई विल से सेकंड टी ऑफ 2. so what output I will get 3, right? What output I will get 3. So some examples we saw here, right? So these are some examples. So I wanted this one only, so I've got this one. So I wanted this 5, so this is a negative indexing, so I got 5. So I wanted these 1 to 3 as numbers only, so I've got this 1 to 3. So this is the third element, okay. Actually a fourth element which got sliced out. So then we can also make a use of step size, right? Step size. So that is also, and this is for reversing a tuple. Okay. So this is universally used. Okay, this is universally used. And how to modify tuple, that also we have seen. Okay, how to modify a tuple. So basically, uh, hmm,
So now let me just slowly go through this. Okay, so tuple is immutable. Basically, I cannot really change this, right? I cannot really change this. But in case I want to make changes, so what I can do is there is a hack. What hack we have? So you can convert the tuple into a list. ठीक है इसका नेचर ही चेंज कर दो इस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो हाउ के यू कैन चेंज इट यूजिंग दिस ऑपरेटर ओके दिस ऑपरेटर so इस तरीके से you can really have a change there okay you can have a change there where now the tuple is list or list is a now list is a mutable right list is a mutable so what I've done is I wanted to change this 1 into 10 okay 1 into 10 so अभी you can see tuple is tuple right जब मैंने tuple को list में change कर दिया तो it was looking like this 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 but just there is a list ठीक है ये list है अरे अच्छा निकला था यार खराब निकल गया anyways now this tuple has changed to a list then what I did is I picked this first item, change it to 10, assign a 10 value, and then I print out this. So now you can see 1 got changes to 10. Okay, 1 got changes to 10. Okay, 1 got changes to 10. And then what I've done is I've later on converted it into a tuple again. Okay, so इसको फिर से tuple operator use करके I have changed this. Okay, tuple operator use करके change this. So now the actual operation looks like this. यहाँ से यहाँ पे पर बीच में ये हैक है जिसमें मैंने क्या कर दिया कन्वर्जन कर दिया कन्वर्जन कैसे कर दिया टपल से लिस्ट में ठीक है टपल से लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर चेंजेस कर दिए कुछ एंड देन अगेन आई हैव चेंजेस टू टपल ठीक है so this is the way you can change it so this is one more another example of same use case right of same use case where I popped the item ठीक है मैंने एक ये लास्ट आइटम या फोर्थ आइटम कौन सा करा था फर्स्ट आइटम मैंने पॉप कर दिया जीरोथ आइटम मैंने पॉप कर दिया so this is how you can actually change right you can actually change the items then now let me just push these changes to a GitHub because yesterday I did not really change this changes to a GitHub so that we can start. So last we had a 15th lecture, day 15. Yeah, day 17th I guess. Day 17th I guess. Status git add. So I'm adding all the changes. Git commit. So I'm committing a changes. Teaching Python. And I'm just pushing this changes. Git push. Okay. So now start with today's. You can see now the changes does not really reflect. So if you see this tuple file is not edited now. If I make changes right away, so you can actually have this sorted wala function with tuple. Okay. So tuple 2 क्या था हमारा? Let's get this tuple 2. Tuple 2 as 1 2 3 4 4 तो गलत है ना इसको गलत है सही है 10 20 50 ठीक है तो इसको चला दे रहा हूँ नाउ यू कैन सी दिस इज मॉडिफाइड यहाँ पर मॉडिफाइड आ गया राइट तो अभी ये आज की चेंजेस नाउ आई कैन ऐड इट इनटू today's lecture book okay so now this sorted function you can use for sorting a tuple in ascending order if I run this you can see अच्छा वो तो same order में आ गया इसको मैं क्या कर देता हूँ 1000 कर देता हूँ इसको मैं 44 कर देता हूँ इसको मैं 522 कर देता हूँ now you can see now this has been sorted in a ascending order okay so you can use this sorted function
So I just wanted to teach you that sorted function is also something that we can use in uh, tuples. Okay. One more thing. Let's understand what we can. So क्या बचा रहेगा? I don't really. Hmm. तो हाँ, एक टाइम वाला जैसे मैंने बोला था कि टपल इज फास्टर, राइट? So tuple is basically faster. Okay, compared to list. Compared to list is slower. ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से देखेंगे। So how you cannot really measure, but because these are very uh, simple operation, so you cannot really measure these. But let's try for I in एक रैंडम लिस्ट रेंज ऑफ 1000। ठीक है, रेंज ऑफ 1000 में कर देते हैं। लेट्स टेक अ टाइम। तो यहाँ पर एक रैंडम लिस्ट बनाता हूँ मैं पहले। ठीक है, एक बड़ी लिस्ट बनाता हूँ। इंपोर्ट numpy as empty and random array। तो यहाँ पर इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, 100, 1000। ठीक है, random array, and now these random list is equals to random array dot list random tuple is equals to tuple of them। ठीक है, तो अभी मैंने एक्चुअली क्या करा है कि एक बहुत बड़ा एरे आई वांटेड टू मेक। ठीक है, जिसका साइज यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ या शेप आ गया, तो लेट मी जस्ट प्रिंट दैट एरे। तो ये इतना बड़ा एक मैंने फाइल बनाया, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये इतना बड़ा एक रैंडम मैंने एरे बनाया। एरे एज इन ये वैल्यूज बनाई, ये रैंडम है। ठीक है, रैंडमली यू कैन मेक। ठीक है, रैंडमली यू कैन मेक। तो मैं इसको फिर से शेप कर देता हूँ। So whatever I'm writing right now, you don't have to worry about this कि यार ये तो क्या ही लिख दिया है ना, हमने तो कुछ नहीं समझा। जब हम numpy सीखेंगे, ये इस numpy, तो यहाँ पर वो आपको आ जाएगा। numpy जब सीखेंगे तब हम random फंक्शन सीखेंगे, shape फंक्शन सीखेंगे, to list सीखेंगे, है ना, ये सारी चीजें सीखेंगे। You don't have to worry। So now the thing is कि हमने ये जो टपल है, एक टपल रैंडम टपल बनाया। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, तो ये बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। ठीक, इतना टाइम लग रहा है इसको सिर्फ लोड होने में, थोड़ा ज्यादा ही लग गया। ठीक, थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है भाई। तब तक हम क्या करते हैं, इसको और एक कोड में लिख देते हैं, जिधर हम रैंडम लिस्ट कर लेंगे। तो इतना बड़ा एक्चुअली वो टपल है, तो काफी बड़ा है। तो अभी मैंने इसको चला दिया है, अरे यार ये कभी भी नैनो इसमें आ रहा है। सो यू कैन सी ये तभी भी नैनो सेकेंड्स में ही आ रहा है।
तो हम we, I am not really able to show you how fast is tuple and how slow is the list is, but you can trust me, tuple is a faster one and list is a bit slower one. Okay, list is a bit slower one. So let's try and go to some more examples. So one more thing is there. The thing is difference between sets and tuple. Okay, difference between set and tuple. Okay, difference between set and tuple. तो हमने डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल देख लिया, राइट? लिस्ट एंड टपल में क्या डिफरेंस है कि टपल इज अ फास्टर, लिस्ट इज अ स्लोअर, टपल इज अ इम्यूटेबल, लिस्ट इज अ म्यूटेबल। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। और बाकी डिफरेंसेस क्या रहेंगे कि ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है और वहां पर यहाँ पर कॉमा कॉमा रहता है, ये कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, ये भी कॉमा कॉमा रहता है। ठीक है, कुछ बेसिक डिफरेंस ये भी है, बट दिस इज लाइक यू कैन टॉक इन इंटरव्यू कि ये दो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर एज सेट एंड टपल में क्या होता है, तो सेट का एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। so this is one of the example of set and this is an example of tuple where कुछ इस तरीके से टपल होता है। ठीक है, तो टपल में और सेट में ये, सेट में दिस इज कर्ली ब्रेसेस, दिस इज राउंड ब्रेसेस। तो और क्या डिफरेंस होता है, तो द डिफरेंस इज दिस इज अनऑर्डर्ड और नॉन ऑर्डर्ड, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड, एंड दिस इज ऑर्डर्ड। ठीक है, ये ऑर्डर्ड होता है, ये अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, सो दिस इज अ एग्जाम्पल। सो अगर मैं इसी सेट वन को, ठीक है, अब इसको मैं चला देता हूँ। सो नाउ इफ आई अगेन कॉल सेट वन, यू डोंट रियली, अभी तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, वन वी कैनॉट रियली बिलीव कि ये सिंपल सिमिलरली वैसी वैसी ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यू कैन सी कि ये कुछ इस तरीके से, अभी जैसे यहाँ पर 12 था, 12 यहाँ पर चले गया। ठीक है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में वी कैन फाइंड द वर्ड, राइट, वी कैन फाइंड द आइटम। वेयर एज इफ यू सी द टपल वन, जो हम देख रहे हैं टपल वन, तो इट विल कम जस्ट एज इट इज। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी कर देता हूँ, देन ऑल्सो इट इज सिमिलरली व्हाट इट इज, लाइक हाउ इट वाज अर्लियर। ठीक है, so this is the basic difference between and tuple and set. ठीक है, this is the basic difference between tuple and set. Another thing you can go with tuple like this. Let's say you have a tuple of 2 comma 3 comma, class, let's say AI, and then again 2.9. Okay, something like this. So if you have something like this, for example, so you can run if else statement, you can run for loop statement, like if, let's say, AI, AI in tuple one, print AI is in tuple one. So you can run the similar examples of if and else statement as we used to do in the list. ठीक है, तो लिस्ट की काफी चीजें इसमें चल जाएगी, but something more or less like whatever the functions which are trying to edit or delete, clear, those things will not run. Okay, those things will not run. You can also run for loop. So let me just run a for loop again यहाँ पर। ठीक है, so for I in T1, okay, print I। ठीक है, so now we know for loop कैसे work करता है। This goes checks each and every item, then उसके बाद ये code execute होता है। So if you can see all the items are exactly the same। ठीक है,
But now if I run this for loop on this set, what will happen कि ये जो आइटम्स है आगे पीछे आ जाएंगे. ठीक है, आइटम से आगे पीछे आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इन सेट वन प्रिंट आई, तो सेट वन उसको रेफर करेगा ऊपर वाली वैल्यू. यू कैन सी these are like not the same in a similar format what we have it here, right? What we have it here. So these are some example for you to understand. Okay, these are some example for you to understand. Like to make you more familiar with the tuple, I'm giving you like a simple example with respect to for if statement, with respect to for loop, or these functionalities like finding a, if you want to find time, you can use this decorator or a function. We will also learn this. Like there are some more ways to find time and loops, you know, things like that. So जब हम time series सीखेंगे तो that will like quite a few things we will learn. So some more examples or some more functions that are there like index है, then count function है, len function है, mean है, max है, sum function. ठीक है, तो ये सारे functions हम अभी ले लेते हैं. Okay, so let's understand in terms of tuple. Okay, so let's say tuple one is equals to tuple one is equals to tuple one is equals to again this 2 5 ai 3. Okay, something like this. So now what I can do is I can say t1 dot index of 4. ठीक है, t1 dot index of 4. तो 4 का एलिमेंट 4 का इंडेक्स, अच्छा इधर 4 है नहीं 3.4 करना होगा. 3.4, 3.4 जो आइटम है, दिस आइटम इनसाइड दिस टपल, इसका इंडेक्स क्या है? So this is 0, this is first, this is second, this is third, right? So you can find the index using this index function. Okay, you can find this index using index function. So now we can say this index function is almost similar what we have learned in the list, right? So this is how you can find. अगर मैं अभी t1 dot index कर दूँ ai का, मैं इसको रन कर दूँ, you can see ai का इंडेक्स क्या दिखा रहा है 2, right? ai का इंडेक्स 2 है, right? Because this is 0 again, 1, second, third and fourth. Okay, second and fourth. So this is how the thing is. Okay, then uh, you can use this count function as well, right? Let's take ये इंडेक्स हो गया. इंडेक्स में कोई like I don't think so it is that difficult that you won't understand, considering that quite a far we have gone in Python. So इंडेक्स बेसिकली इसका जो भी इंडेक्स है फाइंड करने के लिए हम इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं. Similar, simple. Okay, so another thing is you can find count. Okay, so let's say मैंने क्या कर दिया, ये AI को और एक बार प्रिंट कर दिया. ठीक है, AI को और एक बार प्रिंट कर दिया, प्रिंट एज इन ऐड कर दिया. So now I want to know what is the count of AI. So what I will say t1 dot count. Okay, dot count of what? AI. So what will happen? The count of number of times in which appears in the AI. So AI कितने time इस tuple में appear हो रहा है, that this count function will count. So you can see this is appearing twice. दो time आ रहा है. So that's why it is returning 2. Okay, simple है, simple है. If this is simple, type yes in the comment, guys. If this is simple, type yes in the comment.
Okay, if this is simple, type yes in the comments. Okay. So let's understand the other function, length, minimum, maximum, and sum. Okay. So let's say this length of t1, which will give me a length, right? Count भी लिख लेते हैं, then और आ जाओ इंडेक्स भी लिख लेते हैं. Anyway, so ये चीजें मैं अभी कमेंट डालता हूँ. अब क्योंकि काउंट एंड इंडेक्स हमने सीखा है, तो लेंथ लेंथ अभी नो व्हाट इट डज, ये लेंथ बता देगा, इसका लेंथ 5 आना चाहिए, राइट? तो 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया. सो नाउ यू कैन से मैक्स, इसमें से मैक्स मैक्स क्या है, लाइक मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो बताएगा हमें. यू कैन सी 5 इज द मैक्सिमम नंबर, ठीक है, 5 is the maximum. You can use max function to find out, right? So you can say mean of T2, ठीक है, what it will give you, minimum value of tuple. इसमें सबसे मिनिमम क्या है, 1 है, तो 1 आ जाना चाहिए, राइट? So this is how we got minimum value, right? उसके बाद और क्या है, sum, okay? Sum of T2. So इस इन सब का summation बता देगा वो हमें. You can see 15 is the summation of all these items. Okay, 15 is the summation. Like ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब 10 हो गया, और ये 5 हो गया, मतलब 15 हो गया, right? So this is how you can get the summation of of couple couple item. So summation में क्या एक नेसेसरी है, यहाँ पर ना स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए. Let's see AI, if AI can give us some more function. So I think that is all in terms of tuple. तो सॉर्टिंग तो हमने देख लिया, राइट? सॉर्टिंग में दिस सॉर्टिंग का बता देता हूँ एक बार. सॉर्टिंग फिर से सॉर्टिंग बता देता हूँ, जिसमें रिवर्स सॉर्टिंग आई गेस आई शुड हैव टेल यू. सो सॉर्टिंग में क्या होता है, लेट्स से यू हैव दिस T2, राइट? T2 कुछ इस तरीके से है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है. नाउ दिस इज T2. So what I can do is I can say sorted of T2, ठीक है. So what will happen, it will sort the items in a ascending order. If I run this, it will look like this, ascending, मतलब at a very start we will get a very smaller number. Okay, at a very start we will get a smaller number. Now like you can do this using sorted. ये list पे भी similarly work करता है, right? We have learned this. So this is a easier. But what if I want to reverse this, right? What if I want to reverse this? तो हमने similar function देखा था. So let's say T2 reverse equals to 2, right? T2 reverse equals to 2. अगर मैं ये रन कर देता हूँ, you can see entirely ये उल्टा कर दिया इसको, right? Entirely उल्टा कर दिया. And there is one more method, right? T2 of I don't know if this is right. क्या हो गया? राइट, सो ये अभी ये ऐसा था, इसको हमने रिवर्स करते हैं, रन इट अगेन. अच्छा, अभी के लिए तो ऐसे ही रही. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू रिवर्स, राइट? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू रिवर्स. सो this is how you can run the sorted function for ascending and for descending order, right? For ascending and a descending type. Okay. There is one more reversed function is also there. Reversed reversed function, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो, काम तो एक ही कर रही है सब, लेकिन अलग अलग
लोगों ने अलग अलग चीजें बना के रखी है भाई। ठीक है, लेकिन काम तो एक ही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कपल ऑफ रिवर्स, ठीक है, रिवर्स ऑफ टी टू, ठीक है, तो इट विल सिंपली इट विल डू द सेम। कपल इज नॉट कॉलेबल। ये अरे नहीं, ये पहले फेल हो गया था तो फिर से होगा या नहीं होगा। नहीं, एक ऑब्जेक्ट ही दे रहा है। कपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, तो बेसिकली ये तो वर्क नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, आई नीड टू चेक। क्योंकि ये प्रीवियसली जब मैंने व्हेन आई लर्न दिस, so it was working. ठीक है, I will see if this is fine, like this works or not. But as of now, you know these functions, ठीक है, reverse करने के लिए। Like sorted को reverse, you can use this reverse to like convert, like reverse this into or sort this into a descending order, ठीक है। So let me check if this works or somewhat I'm making some mistakes somewhere. तो लिस्ट पे तो वर्क करना चाहिए। I'm not even asking for a tuple. So let me see. Okay. List reverse लिस्ट पे तो वर्क कर रहा है गाइस, यू कैन सी लिस्ट पे तो वर्क कर रहा है, टपल पे नहीं कर रहा है। सो वी कैन गेट लाइक हैव दिस क्लियरिटी दैट कि ये लिस्ट पे तो वर्क कर रहा है, ठीक है, रिवर्स फंक्शन लिस्ट पे तो वर्क कर रहा है बट इट इज नॉट वर्किंग ओवर अ टपल, ठीक है। So let's have this understanding. In order to reverse using, like if you want a reverse function or if you want to reverse the tuple or sort it or reverse it, you can use this sorted function, and then inside the sorted you can use this reverse equals to true. Otherwise, this reverse function which is working for list, right? Which is working for list is not really working at the moment. I don't know if this is right or wrong, but right now it is not working for tuple. Okay. So let's understand some more things, and I think mm, we can we can actually uh, what we can do? We can summarize, right? We can summarize. So let me just summarize you for it, okay? Or let's have a difference of what screen you guys see. So I hope you can see a empty screen, right? If you can see empty screen, let me type yes in the comments. So this is an empty screen, right? तो यहाँ पर हम समझेंगे व्हाट इज टपल। टपल क्या है, एंड इंस्टेड ऑफ शेप लेट्स प्रैक्टिस लिस्ट। ओके, लिस्ट एंड टपल का डिफरेंस हम सीखेंगे, राइट? यस यस, ओके। तो लिस्ट एंड टपल का डिफरेंस सीखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो काइंड ऑफ लाइक वी हैव लर्न दिस बट लेट्स प्रैक्टिस। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि टपल कुछ इस तरह से राउंड बेसिस होता है, वेयर एज लिस्ट इज अ स्क्वायर बेसिस, राइट? List is a square basis. This is very first difference. Okay, this is very first difference. The second difference is tuple क्या होता है कि this is a immutable.
right? This is immutable. Immutable मतलब you cannot edit, not editable, right? Not editable. So you cannot really edit this, but whereas list is a immutable, immutable. So immutable के इसके अलग अलग कुछ फायदे हैं guys, right? क्यों? Now you can see just because of a mutability, मतलब yeah, you can edit this. Just because you can edit this, you can have more functions. You can have more function, whereas in tuple we have less function, right? You can see हमें tuple सिर्फ list के function सीखने के लिए we took 3 parts. हमारे list के function 3 parts में divided है. You can check out those parts on YouTube guys. ठीक है? YouTube पे सारे parts है. Revise those parts, right? So ये 3 differences तो हमें पता चल गया. First is ये round braces है, ये square braces है. ठीक है? This is a this is a immutable. And this is a immutable. This is sorry. हाँ, this is immutable. This is mutable. तो ये गलती हमने यहाँ पे कर दी. ठीक है? This is a immutable. Right? This is immutable और ये mutable है. Mutable होने के कारण this has more functions and this has less functions. But since this is a less function और ये immutable है, ये faster है guys. ठीक है? Faster है and ये slower है. ठीक है? ये slower है. एंड ये फास्टर है इसलिए ये मेमोरी इफिशिएंट भी है. मेमोरी इफिशिएंट एंड ये लेस मेमोरी इफिशिएंट है. मेमोरी इफिशिएंट, राइट? राइट, अंडरस्टूड. तो ये कुछ डिफरेंसेस है. अभी यहाँ के यहाँ हमने 5 डिफरेंसेस वी हैव लिस्ट डाउन. ठीक है? 5 डिफरेंसेस वी हैव लिस्ट डाउन. वन मोर थिंग, दिस इज अ ऑर्डर्ड वन. ऑर्डर्ड वन, ये भी ऑर्डर्ड है गाइस. ठीक है? ये भी ऑर्डर्ड है, लेकिन जो सेट है हमारा वो अनऑर्डर्ड है. ठीक है? तो जो सेट्स हमने सीखा है इसको मैं कुछ अलग कलर में लिख देता हूँ so that you can understand, right? जो हमारा सेट है जो अनऑर्डर्ड है. ठीक है? अनऑर्डर्ड है. सो दिस इज लाइक अ कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट. एंड इवन सेट का भी हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया. ठीक है? क्या है? ये राउंड बेसिस है, ये स्क्वायर बेसिस है, ये इम्यूटेबल है, ये म्यूटेबल है. whereas दिस इज, इसमें लेस फंक्शंस है, इसमें मोर फंक्शंस है. whereas दिस इज फास्टर वन, दिस इज मोर लाइक मेमोरी इफिशिएंट, दिस इज स्लोअर वन, लेस मेमोरी इफिशिएंट. जहां पर यू नीड लाइक, है ना, कि चीजें फास्टर वर्क करे, जैसे अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है. ठीक है? LLMs जो एआई के लिए यूज होता है. तो उसमें ये सारी चीजें होती कि नहीं यार, ये हमारा प्रोग्राम, हमारा एप्लीकेशन फास्टर वर्क करे. इसलिए व्हाट दे यूज, टपल दे यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा टाइप. बिकॉज जो डेटा टाइप्स हम स्टोर कर रहे हैं, राइट, जो भी डेटा टाइप्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, नंबर्स होते हैं, राइट, बुलियंस होते हैं, सेट, डिक्शनरी. तो यू कैन स्टोर दिस इन दीज थिंग्स, राइट, इन दीज थिंग्स. तो मोस्टली कुछ ऐसी चीजें प्रेफर करते हैं. आगे जाके हम जेसन भी सीखेंगे, या डिक्शनरी सीखेंगे, या इवन सेट सीखेंगे. तो these are also some desired things that people want. ठीक है? That people want. So anyways, this is the difference between these two things. Okay? I hope this is clear. If this is clear, type yes in the comments guys. Again, type yes in the comments. Type yes in the comments. And we have only 11 minutes. So क्या करें? चलो एक कुछ चीजें टपल की ही समझ लेते हैं. प्रॉबेबली
we can, I wanted to switch to सेट्स, लेकिन सेट्स के थोड़ा सेपरेट ही सीख लिए रहते थे. ठीक है. कुछ चीजें और. One more thing is there. So let's say in the list, okay, in the list, in the list. So this is list, right? और अगर इसमें एक ही आइटम है तो ये चल जाता है, ठीक है. लेकिन जब हम टपल की बात करते हैं, ठीक है, तो जब इसमें ओनली एक आइटम होता है, यू यहाँ पर देखो, अरे ये चल तो जा रहा है वैसे. लेकिन समटाइम्स यू हैव टू मेंशन दिस कॉमा. तो ये कॉमा इट एक्सपेक्ट, ठीक है. ये अभी तो चल गया एक्चुअली, बट समटाइम्स अभी शायद पाइथन इम्प्रूव हो गया रहेगा, लेकिन व्हेन आई वाज लर्निंग, so this was also something that was one of the difference कि टपल में एक कॉमा की जरूरत होती है, ठीक है. टपल में एक कॉमा की जरूरत होती है. सो लेट्स से कुछ और चीजें आई वुड लाइक टू ऐड इन द टपल. फर्स्ट another thing is, let's say you have this tuple 4, right? Tuple 4 जिसमें जिसमें all you have is strings, ठीक है. strings है. strings किसकी है? मेट्रो सिटीज, जैसे पुणे, मुंबई, है ना. ये सारी चीजों की एक है बेसिकली, टपल है आपके पास, ठीक है. बट नाउ व्हाट यू वांट इज, आपको इसको ज्वाइन करना है, ठीक है. एक डॉट ज्वाइन फंक्शन होता है दैट वी हैव लर्न इन 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 प्रीवियस क्लासेस आल्सो, राइट. क्या होता है? डॉट ज्वाइन फंक्शन होता है, ठीक है. डॉट ज्वाइन फंक्शन. So वो function is, you can dot join all of these things into a single string, ठीक है. अभी तो किससे ज्वाइन करना है आपको, ठीक है. दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू मेंशन. तो आई एम मेंशनिंग दिस, ठीक है. मुझे इसको इससे ज्वाइन करना है, डॉट ज्वाइन को, ठीक है. तो हर एक सिटी के बीच में ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है. हर एक सिटी के बीच में ये सिंबल आ जाएगा. इफ आई रन दिस, यू कैन सी पुणे, फिर मैं और एक स्पेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है. नाउ यू कैन सी पुणे, देन यहाँ पर और एक वो सिंबल आ गया जो मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, ठीक है. यू कैन मेंशन एनीथिंग, राइट. So I just wanted to tell you कि ये now this has been converted into a string, ठीक है. पहले ये किसमें था? It was a tuple, right? Because you can see braces है यहाँ पर, separated by comma है. Inside this we have these things. But now what you want all this data और इन सबको इस चीज से सेपरेट करना है, ठीक है. So what you got is, what you can use डॉट ज्वाइन फंक्शन. डॉट ज्वाइन फंक्शन को आपको बताना होता है कि किससे आपको डॉट ज्वाइन करना है, ठीक है. तो वी हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन कि ये इसको यूज करो और इसको ज्वाइन कर दो. इन सारी चीजों को एक ही चीज में ज्वाइन कर दो. सो नाउ दिस इज एंटायरली वन स्ट्रिंग. दिस इज एंटायरली वन स्ट्रिंग, ठीक है. कंप्लीटली अभी एक ही स्ट्रिंग है. तो नाउ इफ आई चेक दिस, अगर मैं इसको कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, if I check of that variable, it is a string, ठीक है. समझ में आ रहा है? It is a string. It is a string, ठीक है. तो इस तरीके से also you can convert this tuple into a string. और एक सिंपल ये ऐसे भी होता है कि str कर दिया एंड tuple 4 कर दिया, ठीक है. tuple 4 करके तो ये जो tuple 4 है ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में. तो ये सिमिलर ऐसा ही है, लेकिन बस इसको इसके ऊपर कोट्स आ गए, ठीक है. यू कैन सी दिस कोट्स, ठीक है. यू कैन सी दिस कोट्स. तो यू कैन इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, काफी चीजें कर सकते हैं.
I think I have entirely covered the tuple. I think there are no more functionalities in terms of tuple. We have less time. Otherwise, we could have started with sets also. But let's keep that set function तो थोड़ा freshly सीख लेंगे कल. ठीक है. So let's quickly revise and close this class little early today. So the definition of a tuple is anything which is in a parenthesis separated by comma. You can store any data type, like different data types. So these all data types you can store and some more data types also, like integer, float, complex, right? And tuple also can allow duplicate values similar to list, whereas tuple is ordered and it is immutable. ठीक है. तो कोई आपको पूछे कि what is tuple, right? Tuple in Python, you can see these, you can say these things. So anything which is in parenthesis and separated by comma, which it can store different data types like integer, float, complex, strings, tuples, tuples inside tuples, or dictionaries, sets, right? Sets. Other than that, you can say boolean values, boolean key string and all. So all these things which a data type can store, and also a data type which is immutable and considerably faster than a list is called a tuple. So ये simple एक definition है. You are convincing everything about a tuple, right? You are convincing everything about a tuple. Then then what we have learned is we compared the tuple with list, right? Tuple with list. जिसमें tuple में sorry list में you can change any item from the list. You can pop or you can clear, you can remove, right? You can remove, clear, right? So ये सारे function you can use in what? In list you can use. But you cannot really use this similar function in in tuples, right? Tuple में ये सारी चीजें हम नहीं use कर सकते. So I think I have really revised these so many times, right? कि आपको ये completely revise everything. ठीक है, great. It's already I got the answer. So I was asking कि जरूरत है या नहीं है. So now हमने एक लिस्ट ले लिया था, सॉरी एक स्ट्रिंग ले लिया था. ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लिया था. सिंपल इट वाज समथिंग लुकिंग लाइक अ टपल, बट जब हमने इसको कन्वर्ट करा टपल में, यानी वी एक्चुअली कन्वर्टेड इन अ टपल, इट गॉट कन्वर्टेड लाइक दिस. तो इसमें से हर एक आइटम को, तो इसको भी इसने कॉमा सेपरेट कर दिया, इसके बाद कॉमा को भी कॉमा सेपरेट कर दिया, वन कॉमा स्पेस टू कॉमा, राइट, समथिंग लाइक दिस. तो इस तरीके से we can convert any string into a tuple, convert any string into a tuple using tuple of whatever the thing is, right? You can also convert any list into a tuple. So you simply list tuple में convert किया. What you have to use this tuple as a operator, right? इसको operator कह लो या function कह लो. Then you can also directly do like this. The tuple of particularly whatever you want to convert. तो यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी लिस्ट है जो कि कन्वर्ट हो जाएगी टपल में. ओके, देन वी ट्राई टू सेट सम अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन टपल. तो एक टपल में दूसरे टपल को ऐड कर सकते हैं. यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट टपल, दिस इज द सेकंड टपल. यू कैन मल्टीप्लाई विथ 2 3, राइट. तो यहाँ पर मैंने अगर 3 भी कर देता हूँ, यू कैन सी 3 आइटम आ गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5. ठीक है, इस तरीके से यू कैन गेट 3 आइटम, you can get 3 items. Okay. Another thing is you cannot really multiply one tuple with another tuple. Okay, you cannot really multiply with one tuple with another tuple. Whereas अगर मैं लिस्ट ले लूँ, list 1 is equals to
1, 2, 3, 4, 5. List 2 is equals to, and if I say list 3 is equals to, instead of plus, and if I say change list 3, oh, can't multiply sequence of non-int in list. ठीक है. Okay, this is also something we got to know कि ये भी वर्क नहीं करता है. ठीक है. So list में भी also we cannot really multiply one item with one list with another list, but we can multiply. इसको ऐसे उठा देते हैं. तो ये तो चल जाता है. So now list 1 has populated 3 times, right? Has populated 3 times. So this is a similar operation that we can see in the tuple as well. But like if tuple and list are almost similar with respect to some differences that we have already seen. Okay. Then we saw the indexing. This is a simpler thing that I think I have not really want to repeat. Another thing that we have learned is how to modify a tuple. Okay. So modify कैसे कर सकते हैं even though it is a immutable. So there is a one technique that is convert the tuple into a list, do the modification, and then again convert the list into a tuple. Right. So this is the technique that you can use in order to, if you want to basically convert. Okay. Then we have seen some examples. So this is sorted that we have also seen. We try to see whether how fast द टपल इज. तो जहाँ पर हमने एक रैंडम लिस्ट तैयार करने की कोशिश करी जो कि बहुत ही बड़ी थी. सो दिस इज अ रैंडम टपल दैट वी हैव क्रिएटेड. ठीक है. तो ये रैंडम टपल हम वी वांटेड टू चेक वेदर list is faster or tuple is faster, but this long tuple is also faster in our computer because like, so when you really deal with very big data set तो यहाँ पर आ जाएंगे like 10 5 seconds आ जाएंगे 1 2 seconds आ जाएंगे. like यहाँ पर 1 second आ जाएगा तो यहाँ पर like 1.2 1.5 seconds कुछ आ जाएंगे list with respect to list. So basically tuple is a faster one. ठीक है. so यहाँ पर हम समझ नहीं पाए. But anyways, tuple is a faster one. Another thing is we also compared with set, right? Set के साथ compare किया. तो set is an order whereas tuple is a order one, right? ये question भी पूछा जाता है बहुत बार कि set and tuple के बीच में क्या difference है. There is only one difference. यही एक difference है. Otherwise इन दोनों में बहुत सारी similarities है. तो कल हम will learn sets tomorrow, so you will get them. ठीक है. And we also seen like if and for loops in the tuple, right? I try to cover every each and every functions from the tuple. Probably I have left few because सारे तो नहीं cover कर सकेंगे. हमें जल्दी जल्दी Python cover करना है. And we want to move to this exciting part of AI, guys. तो हम अभी quickly Python cover करेंगे. ये थोड़ा और टाइम लगेगा. हमारा 60-70% Python हो चुका है. So what we are going to do is quickly Python cover करके machine learning पे चले जाएंगे, then deep learning, and then I think I will assign some another teachers for another topics, but we will cover this AI part along with NLP. तो NLP सबसे पहले सीखना होगा. NLP is natural language processing and then AI because there are so much advancement going on in the AI and I have updated the syllabus also. So updated syllabus I will try to share with you. और I am also adding new things जिसके कारण like you will get a good job opportunity क्योंकि market ready चीजें आपको सिखाएंगे. ठीक है. तो AI के ऊपर जल्दी जाना है. You guys need to practice a lot so that we will reach there very soon and हम बहुत सारी exciting new चीजें कर पाएंगे मतलब.
Another thing that we have learned is sorting. So you can use sorted function to do the sorting in ascending. If you want to reverse, or you can, if you want to sort in a descending order, you can use this reverse function. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि given a tuple, sort it in a reverse और descending order. तो हम तुमको sorted ही use करना है, but you need to use this function that is reverse. बहुत बार बोलेंगे कि ये reverse function मत use करो. So what you have to do is you have to use this. Okay? This is also something you can do. Okay? Then we saw this reverse function does not really work in the tuple, but it does work in the list. Okay? Then we saw some dot join function. Okay? That I thought like I should tell you. And this is a simple thing I think I had not told you, so that's why I told you. So this is all about today, guys. So let's learn the other set function tomorrow and see how far we can go. So if you have any doubts, you can drop in the comment box, and if you have understood them, you know what to do. You need to type big win with the long ends in the comment box so that we can close the day. If is there any question, you can talk. Otherwise, if alright. I hope you enjoyed this session as well. Let's close this stream. See you tomorrow, guys. Bye bye and good night.